ओके सो गुड इवनिंग। सेमीफाइनल 2 भी खत्म हो गया है और आज स्वागत है इस सेमीफाइनल्स के रिव्यू के बारे में। कल एक हुआ था और आज एक सेमीफाइनल हुआ है। दोनों ही अलग अलग तरीके का सेमीफाइनल हुआ, लेकिन दोनों एक सेमीफाइनल के टक्कर का मैच था। तो अमित को वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू यू। थैंक्स फॉर बहुत बहुत ज्वाइनिंग। धन्यवाद राजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और हमारे साथ भास्कर भी अब जुड़ जाएंगे। भास्कर भी चलो भास्कर आ जाएंगे, कोई नहीं। ओके हम्म। सर, सो आज हमने दो सेमीफाइनल्स देखा। एक इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो कल हुआ, आज इंडिया। जी जी सर, भास्कर भी आ गए। भास्कर को भी स्वागत कर लेते हैं। भास्कर प्रकट हुई है। अरे यार, अरे पैट कमिंस को तो पहले बोल लेने दो पूरा। नहीं नहीं, टाइम टाइम हर चीज पे टाइम होता है सर। पैट कमिंस का तो बातें सुनते ही रहेंगे। और वैसे भी वो जैसे अमित ने कहा भी कि क्या ही बोल लेंगे वो उसके बारे में। खैर, स्वागत है। दोनों सेमीफाइनल्स का आज रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये मैचेस सज रहा है। लेकिन प्रीव्यू नहीं करेंगे। फाइनल का प्रीव्यू शायद कल ही कर पाएंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा। तो एक अच्छा रिव्यू करते हैं। पहला टॉपिक, मैं पहला आज के मैच से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि दिस इज फ्रेश इन आवर माइंड एंड इसी से स्टार्ट करना चाहिए एंड देन विल। तो भास्कर, आप जो पैट कमिंस को देख रहे हैं, आप अपने आप को म्यूट करके देख लीजिए। देख लीजिए कि पैट कमिंस क्या बोल रहे हैं। खैर, अभी तो आपके पास आता हूं मैं। तो सर, आप बताएं कि आपने आज का मैच देखा, आपका क्या एनालिसिस है? व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? हल्का सा बारिश भी हुआ, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए देखिए ईडन गार्डन। पहली पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट टॉस टू लूज फॉर साउथ अफ्रीका फॉर ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगता है कि शायद से पिच को रीड करने में दोनों ही टीम्स को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और आई डोंट नो, आई मीन मुझे याद नहीं पैट कमिंस ने क्या कहा कि अगर वो टॉस जीते तो बैटिंग करते क्या, पर आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टॉस टू लूज। और थोड़ा सा मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका ने भले ही पिच रीड करने में गलती कर दी हो, पर ईडन गार्डन्स को रीड करने में गलती नहीं होनी चाहिए थी। आई थिंक हमें पता है ईडन गार्डन्स का पिच उस टाइम पे जहां तक मेरा ख्याल है हवा में काफी नमी थी, बादल भी लग रहे थे। सो देयर वाज अ गुड पॉसिबिलिटी। अब साउथ अफ्रीका हैज इक्वली वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप। उनका फास्ट बॉल अटैक काफी स्ट्रांग है। सो जो सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की हुई, साउथ अफ्रीका की वही सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की हो सकती थी। पर लाइक आई सेड, इट वाज अ गुड टॉस टू लूज। एंड बस एक ही चीज की कमी रह गई कि जब मिलर खेल रहे थे तो उस पिच में जो डिमंड्स थे वो दिख नहीं रहे थे। और उन्होंने एक अपना तरीका निकाला था खेलने का। मैं उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। उन्होंने हर बॉलर को प्लान करके खेला, और आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई थिंक हिज इनिंग्स वाज आउटस्टैंडिंग इन दैट कंडीशन with wickets falling around him. I think he did a brilliant job. पर एक कोई साथ और चाहिए था। शायद से क्लासन थोड़ा ज्यादा खेल जाते, या थोड़ा सा कोई अगर एक उनको 40-50 रन मिल जाते तो ये रिजल्ट कुछ और ही दिखता आपको। सो लाइक came very close, but yet again, fifth, five semi-finals and nothing to show for. I mean, can't get more, agonizing than that. That's all I'll say. राइट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट क्योंकि एक आई थिंक इवन इफ यू थॉट दैट बैटिंग वाज आवर स्ट्रेंथ, देन आप बैटिंग के लिए इलेक्ट भी होते हो, which I think is not a bad decision. But then the thing is that you should have stayed on with those 2 wickets only which you lost. मार्करम और वैंडर डूसन, दे कुड हैव प्लेड बेटर बिकॉज जब वो दोनों खेल रहे थे स्विंग उतना नहीं था। हेजलवुड वाज ट्रबलिंग, लेकिन उतना नहीं था। दे कुड हैव weathered that storm and they could have gone ahead, and if they had stayed back, then South Africa would have got 260. 260 was a और winning score एक here. और एक बात मैं कहूंगा, मुझे मतलब दुख है और कुछ हद तक एक सवाल भी है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पर बहुमा ने कहा कि वो फिट नहीं थे 100%। अभी मेरा कहना यह है कि अगर वो 99% भी अगर वो फिट होते और 1% अनफिट होते, तो मुझे लगता है उनको बाहर बैठना चाहिए था और हेंड्रिक्स को खेलना चाहिए था। और आई अंडरस्टैंड कि वो अपनी टीम को यहाँ तक लेके आए हैं, बट स्टिल देर इज नथिंग रॉन्ग बिकॉज पीपल लाइक डिकॉक एंड मार्करम वर वेल ऑन द फील्ड। और आई थिंक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डिकॉक
एंड में तो ऐसा लग रहा था कि शायद से वही अपने ट्रूप्स को मार्शल कर रहे थे और पोजीशनिंग भी वही कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस भी है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक बोथ आर वेरी सीनियर प्लेयर्स। तो वो एक मुझे ऐसा लगा कि एक हाफ फिट बबूमा अंदर आके थोड़ी मुश्किल कर गए, और ग्राउंड पे आपने देखा उनका वो मूवमेंट भी स्लो था, और ओवरऑल मुझे लगा कि दैट वाज अ बैड डिसीजन। बहुमा के बारे में बात करेंगे, विल जस्ट टॉक अबाउट बहुमा एज वी गो हेड। भास्कर, मैं आपके पास आता हूं। तो एक तो आज, सो अमित कह रहे हैं कि इट वाज अ गुड टॉस टू लूज, प्रोबेबली यस, बिकॉज उस जो 15 फर्स्ट 10-15 ओवर्स था, उसका फुल फायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया ने, और उसके बाद बहुत पीछे कर दिया। And the same thing happened in the batting also. First 10-15 overs they knew कि it would be a better wicket to bat on, और उसका फुल भरपूर फायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया ने, और एक काफी हाई स्कोर कर दिया। तो देखा जाए तो 30 ओवर्स अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया, और उसका ही फायदा उठाया। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? I don't really think it was a good toss to lose. If you see South Africa, if they had been chasing say the same total, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग किया होता, यही चीज हुआ होता। ऑस्ट्रेलिया हैड स्कोर्ड 212. We saw what's happened before. I don't think South Africa would have reached here in this kind of a pitch. So I think South Africa batting first was the best thing to happen for them. It was a normal pitch. They should have just weathered the storm instead of losing 4 wickets. If they had, if you see Quinton de Kock threw his wicket away, there was no need to really go for that kind of a shot in that kind of a situation. You just needed to they just needed to bat 40-45 overs and see where they go, and they would have reached 240 250 easily. And once if they reach 260, it's a proper par score where they could have had a proper game. So I think that's why they missed out. But still, I'm glad they played the 50 overs, 49.4 overs खेले वो, और 2011-12 रन बनाए। एक बार ऐसे शुरू में ऐसे लग रहा था कि they would collapse the way what happened in I don't remember where, St. Kitts Nevis, the 2007 semi-final. They just collapsed there. And 71 for 7 ho gaya tha. They won a very important toss. They thought they can just go out all out attack, and they were 71 for 7. They somehow reached 150, which was not enough. So in this match, they should have just played normal cricket, played like a normal one-day match instead of losing too many wickets up front. And then they would have got close to 250, 260, and then it would have been a proper game. Even if Australia wins, it would have been a proper game. Here इनके पास 40-50 रन कम थे. 2012 was a very, very low total. Still, they made a match out of it. That itself shows that it was their early top order collapse that really hurt them. So even comments, if he had won the toss, he would have batted first. Eden Gardens is not a pitch where you chase. We have seen that in Hero Cup finals. We have seen that in the Wills Trophy finals. We have seen what happened in that disastrous semi-final in 1996, India versus Sri Lanka. So Eden Gardens, you do bat first. The ball starts, and a big match. It's a big match. South Africa have a very poor record chasing. So batting first was the best way to go for them. Even Australia would have batted first. Any team would want to bat first in a crucial semi-final. So मुझे नहीं लगता कि टॉस में कुछ प्रॉब्लम हुई। मतलब पहले ही 2-3 विकेट खो दिए उन्होंने। 2 विकेट ठीक है, चले गया तो ठीक है, बट 4 विकेट्स फॉर 24 वाज टू मच। उसके बाद फिर somehow they made Klassen and Miller were batting very well. If you see, Klassen got out to a straight delivery. I don't know, like off Travis head. He could have easily batted. Or Klassen or Miller had continued for some more time, they could have got close to 250, 260. I don't think, I still believe Australia could have still won that even after that, but it could have been a closer game and a proper one-day game. Here they were like 40, 50 runs, clearly short of a par score. Rajiv. Right. No, I agree with you. Even 250 was chaseable by Australia, but the only thing was that even when Smith was playing or Labuschagne was playing, pressure ही नहीं था उनके पर, रन रेट का प्रेशर नहीं था। थोड़ा बहुत तो रन रेट का प्रेशर होना जरूरी होता है to force you to make those mistakes. And the ball was gripping and all, so Bauma had nothing to do but just to get these two chaps bowling in tandem for some time, which they did. But Maharaj ko, they just played him out, and Shamsi was having those ripper of balls which was coming in and all those stuff. He was doing his tricks, but end of the day score था नहीं, तो क्या ही कर लेंगे वो लोग. And I also believe कि I think Klassen का हुआ ये कि Travis had just before he got out, that previous delivery he bowled a very big spin,
मतलब ऑफ स्टंप से सीधा लेग स्टंप की तरफ आते हुए, तो he played for that shot and did not play for the straighter one, and just Travis had just foxed him, and that is something, मतलब हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करेगा करके. And then immediately these guys also have four proper bowlers towards the end who don't bat. Kodzi and Maharaj can just stick around but can't do any, they can't score the runs. So कहीं ना कहीं तो वो हो गया जो भी है. अमित आपके पास आता हूँ अभी. So Australia, what do you think? I mean, Australia, we were all thinking that Australia will go because of just one big aspect of mental toughness. कि we have been here and we have done this many times. एक और बार कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है करके. And and that's why they won the match today also. But what makes Australia special? Why are they able to, वो क्या करते क्या है कि मतलब आ जाते हैं. And this is not the best Australian team, World Cup team, right? I mean, ये I won't rate this as a very high team, but somehow they know how to win. Yeah, I think 8 बार फाइनल में, that just speaks volumes about the grit that this Australian team has. And I think, देखिए कुछ हद तक थोड़ी लेगेसी रब ऑन तो करती है. आई थिंक, आई मीन द वे दैट आई वाज लुकिंग एट ऑस्ट्रेलिया, मुझे ऐसा लगा कि शायद से पहले वो मैचेस में हारने के बाद किसी ने उनको याद दिलाया हो कि भाई तुम ऑस्ट्रेलिया हो और तुमको क्या करना है तुमको पता है. एंड आई थिंक दे हैवंट लुक बैक. आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, आखिरी के लाइन से 7 मैचेस जीते वो. एंड दे आर ऑन अ काइंड ऑफ अ मोमेंटम which we know that Australia is famous for. And I think जो आपने सवाल पूछा कि उसमें क्या ऐसा है, तो देखिए विनिंग इज अ हैबिट. एंड काइंड ऑफ दैट वर्ल्ड कप में जैसे साउथ अफ्रीका एक प्रेशर में आती है, वैसे ही वर्ल्ड कप गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ देम. दिस इज व्हाट वी हैव सीन ऑल द टाइम. एंड देखिए इवन इफ यू सी द लास्ट, जहां तक पिछला वर्ल्ड कप T20 था या कोई वर्ल्ड कप ही था, जहां पे वहां भी आई वुड रेट ऑस्ट्रेलिया टीम एज द बेस्ट वन, जहां पे वो वर्ल्ड कप जीत के निकाल के ले गए. आई थिंक T20 का था जहां तक मुझे ख्याल है. और द सेम इज द केस दिस टाइम ऑल्सो. द टीम, बट द टीम इज मे नॉट बी द बेस्ट, बट देखिए उनका उनका क्या है कि अनलाइक सम ऑफ द अदर टीम्स, उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता सकते हैं. और अगर उनमें से कोई भी किसी भी दिन क्लिक कर गया तो आपको मैच खींच के ले जाएगा. अब देखिए आज, जैसे आज का तो आई वुड से, दैट्स व्हाई आई सेड व्हेन वी वर टॉकिंग, इट वाज वेरी स्क्रैची मैच. आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आस्क मी, ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच दिया है उन्होंने, पर मुझे उसकी इनिंग मतलब ऐसा लग रहा था कि वो आंख पे पट्टी बांध के खेलता तभी इतने रन बनाता. उसके शॉट्स जिस तरह वो खेला था, जिस तरह की रिस्क को ले रहा था, तो मतलब इट वाज अ इनिंग्स व्हिच वाज फुल्ली मार्ड विद चांसेस. तो पर अगर आप आज की इनिंग उनकी छोड़ दीजिए, जहां पे मोस्टली सारे उनके बैटर्स फेल हो गए और आई थिंक स्मिथ निकाल के ले गया, बट पहले देखें तो किसी मैच में आपको मिशेल मार्श मिलेगा, किसी मैच में आपको मैक्सवेल मिलेगा, या उनके ये 2-3 जो उनके प्लेयर्स है वो कोई ना कोई. और अब ट्रेविस हेड आ गया. अभी ऑफकोर्स आज तो थोड़ा स्क्रैची था, बट इसके पिछले इनिंग्स में उसने एक अच्छी इनिंग्स खेली है. तो ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की एक बेनिफिट है. और दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रांग बनाता है वो उनकी बॉलिंग है. आई मीन ठीक है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, पर आई थिंक जैसे इंडिया का हम कहते हैं कि 3 pronged अटैक है फास्ट बॉलिंग का, वैसे उनका भी बॉलिंग अटैक स्ट्रांग है. एक तो द बॉलर्स आर टॉल, दे कैन गेट दैट निप फ्रॉम द विकेट, and both Stark and Hazelwood are dangerous. There is no doubt about it. So this together, I think, still makes them a very potent combination. मुझे लगता है कि India is probably up against one of the toughest matches, not because of the combination of the Australian team, but because of the mental toughness of his team to make it to the final and then create that impression. इसलिए मुझे लगता है कि अगला मैच काफी टफ होगा. राजीव. राइट. नहीं, प्रीव्यू तो करेंगे इसके ऊपर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, एंड विल टॉक अ लॉट अबाउट इट. सो भास्कर, मैं आपके पास आता हूँ. सेम क्वेश्चन आपको भी देता हूँ कि व्हाट मेक्स ऑस्ट्रेलिया टिक. मतलब व्हाट इज इट दैट दे डू कि आज जैसे वो 4 विकेट जो निकाला उन्होंने, दे न्यू दीज आर द कंडीशंस. हेजलवुड को कमिंस ने पूरा डलवाया उससे कि तुम डालो यार करके, क्योंकि ही नोज ही डिडंट कम बैक टू बॉल अगेन. सो कहीं ना कहीं कमिंस की कैप्टनसी एक लेवल पे बहुत ही कम जा रहा था ना, बट नाउ इट्स ऑन अनदर प्लैनेट ओनली. सो व्हाट मेक्स देम सो स्पेशल? See, that's where the Australian cricketing culture that happens. For example, South Africa
This doesn't happen to South Africa when they play the Rugby World Cup. They won the last 2 Rugby World Cups. They've won 4 Rugby World Cups. If you see the last 5 Rugby World Cups, 3 have been won by South Africa, 2 by New Zealand. The same 2 teams which seem to struggle when it comes to ODI knockouts, isn't it? In spite of reaching those knockout stages. South Africa, we talk about them so much because they keep reaching the knockout stages. If they just kept getting knocked out in round robin stages, we won't even be discussing them. So that's where I think Australia's cricketing culture has really made them into what they are. The thing I think I remember Adam Gilchrist saying, we just have 6 first-class teams. They have New South Wales, they have Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, Northern Territory, and Hobart. Tasmania. So they have only 6 first-class teams, and that's what makes them really tough because they play against each other. There are no like easy first-class games. In India, you have say Delhi playing against Jammu and Kashmir, or Bengal playing against Nagaland, where you have a lot of easy runs, soft runs. So there's no soft runs available there. So by the time they make it to the international side, they're already like so hardened that they really know how to win close games. For example, this has happened for India also. The IPL we have seen before IPL, India used to struggle to chase. You remember, like 90s में हम देखते थे मोंगिया और जडेजा और अजहरुद्दीन वगैरह आके कितना स्ट्रगल करते थे. पर IPL के बाद हमने देखा कि our batsmen are able to get us across the line in close games, isn't it? Because IPL में उन्होंने बार-बार कर चुके हैं वो लोग. मतलब 20 बॉल में 40 रन चाहिए वो बना देते हैं सारे प्लेयर्स. बट सो व्हेन इट कम्स टू अ बिग स्टेज they don't, because IPL is also a very big stage, so that happens every year. तो हर साल नॉकआउट क्वालिफायर्स एलिमिनेटर्स खेल के they become so used to getting us across the line in big matches, also in international cricket. So I think that's where the Australian culture really helps them in all forms of the game. And I think India is getting there. India has really, since the turn of the century, since Ganguly took over, I think India has made giant strides. That the only team that stands between India and ultimate greatness is Australia. So, and I think that itself speaks a lot about Indian cricket. So, but that's what I think makes Australia tick, the cricketing culture. And the number of first-class teams they have is very limited. Rajiv. Right. नहीं, I think हमारा रणजी भी after that quarter final ना, it really gets tough and strong ही है हमारा भी. But yeah, I think Australia has उनका sporting culture ही एक अलग level पे है. They don't take things for granted. So I have to say that you have to give it to Australia. So इंडिया की बात की, मैं आपके पास इंडिया भास्कर आप ही से स्टार्ट करता हूँ. इंडिया के बारे में कल का मैच हुआ, कल काफी रिकॉर्ड्स हुआ. मतलब कोहली का 50th 100 हुआ, काफी इमोशनल हुआ, काफी लोग थे. इट वाज लाइक द who's who of Mumbai and across the world was there in Mumbai yesterday. So special 100 we saw Shreyas Iyer, जिसको मैंने और शायद अमित ने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, but that boy has really done well in the last 2 games and yesterday was tonking sixes for fun. And then finally I think the biggest and the most, मुझे जो सबसे अच्छा मोमेंट लगा वो है 7 wickets of Shami. Not because he took those wickets, it is because there are 2 things here. एक वो 7 wicket haul इंडिया एक इंडियन ने नहीं किया. That was very special, right? 7 wickets किया उसने. So we can say that, you know, couple of times Jasprit Bumrah could have actually picked 3-4 wickets. Shami का नहीं होता, लेकिन I think the stars was destined for Shami to pick up those 7 wickets. And then the second thing was in a knockout match, finally, मतलब कुछ दिनों से हमारा वही नहीं चल रहा था ना ठीक से, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं it was falling short. But yesterday there was a determined effort. We'll also speak about New Zealand also, who put up a wonderful show. उन्होंने किसी मतलब they really made us sweat, you have to say, but there was a fair bit of distance in the victory, though in the final way you have to look at that. So I want you to sum up on what you think about the victory of India and what you saw. Do you want to go first? नहीं, आप ही को बोल रहा हूँ सर, आप ही इंडिया के बारे में बात ठीक है, आप ही से स्टार्ट करेंगे. देखिए, तो आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट ओडीआई मैच. ओके, अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री में India has never lost an ODI knockout game in one-day World Cups, batting first. Of course, in Champions Trophy, we have lost a game in, I think 2000 का दो knockouts हारे हम पहले बैटिंग करके. बट वर्ल्ड कप्स, ODI वर्ल्ड कप्स, 50 ओवर वर्ल्ड कप्स में India has never lost a knockout game when they have batted first.
And when you bat first, you can bat freely without any pressure of the run chase. So that brought out the best in all of India's batsmen. Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer. I'm sure Shubman Gill, if he had played, he would have also got 100. If he had not gone in for cramps, he would have also got 100. So I think it was a perfect one-day game. Thoda sa India, I just have, I don't want to really point fingers, but I did feel that they got a bit complacent. क्योंकि वो intensity दिखाने, we saw that of course they let the intensity drop in the game against Netherlands, but that's normal. वो गेम में कोई इसमें था, but इसमें 398 था, but we could have been a bit more clinical. Shami had to get us out of trouble with Mitchell and Williamson going great guns. We knew we had the game under control. The run rate was always raising because we had such a big total. But you know, आजकल 10-12 का run rate over the last 10 overs is not unachievable. एक जमाने में तो मतलब अगर 8 के ऊपर होता तो it felt like it's not possible at all. But last 10 overs में 120 रन भी बन जाते हैं. So I think that's where India was slightly off color. Probably 398 was a good enough cushion. So वहीं पे थोड़ा सा weakness था, but I think India played clinical cricket and won by 70 runs. So I think India was always comfortable. The real challenge would be ahead, but India कभी भी टॉस जीत के बैटिंग किया है, और even when we have been put in, we have never lost a knockout game. And also when the other team has put India, when the other team has made India chase, that's all, we've not lost a game then also. The only time we have lost a game is we have lost the last couple of semi-finals. So right, but batting first, India has never lost a game. Rajiv. Yeah, I think batting first, it's not only about India. Most of the teams are pretty happy to, especially if they have the batting power, right? They will go for batting first and win those matches. I think India made serious mistakes in 96 World Cup semi-final or 2003 final. They made some serious errors in terms 87, of 87. so they Yeah, don't need to yeah. chase करने Three की जरूरत knockouts नहीं we थी. have three knockouts we have won the toss, elected to field and lost. And of course, last two knockouts we lost the toss. So I think 2019 में और 2015 में हम toss हार गए थे. And also the first Super Even 6 in game 20. in 99. Yeah, So so मतलब and वहीं पर 2011 पे भी we lost the toss. Sangakkara elected to bat first. yeah, we So lost the ठीक है toss, मतलब. yeah. Yeah, but then we won the match. So that's a different story. Right, And sir. So Sangakkara took the right decision. हाँ, तो टॉस में अगर गलत डिसीजन हो जाता है और थोड़ी देर में टीम shoulders start dropping. अगर टॉस में गलत, if you win the toss, elect to field, and the other team goes great guns like what happened in 2003, then you start feeling stressed. मगर अगर if you have been asked to chase, then we can't do much about it. So इतना बुरा नहीं लगता है उस वक्त. So team is still motivated to do well. So I think winning the toss was big yesterday, and I think India played brilliantly. The way India should win a one-day game, they showed how to win a one-day game batting first. Rajiv. Yeah. सर अमित सर आपके पास आता हूँ. सो कल के मैच के बारे में बताएं. And while Bhaskar has covered a good number of points, what I want you to be focused on is how did Rohit Sharma's captaincy, affect that entire match? Because he's right, Bhaskar is right. बीच में ना हमारा we became complacent, काफी fielding errors हुए. जडेजा ने एक overthrow फालतू में फेंक दिया. But then there was a drinks break और उसके बाद things changed. And obviously Rohit spoke and he got marshaled his troops together. तो एक रोहित के बारे में बात कीजिए, और दूसरा ये भी जरा मतलब let us speak also about how well did New Zealand, मतलब वो किस तरीके से लेके जाने की कोशिश किया उसने. They were not scared of the occasion, and while they bowled very poorly, which was expected because the resources नहीं थे, but they really batted with some courage. So उसके बारे में भी बताएं. सो देखिए, आई थिंक राजीव, पहली बात तो ये है कि अगर कॉम्प्लेसेंसी की हम बात करते हैं तो yesterday if you look at टीम इंडिया, आई वुड से कि एक या दो या तीन प्लेयर थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी हो सकती है, पर इफ यू आस्क मी, मुझे कल टीम इंडिया बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं लगी, एंड आई टेल यू द रीजन फॉर दैट. अगर मुझे कुछ कॉम्प्लेसेंसी शायद से कुछ दिखाई दी तो वो शायद से कुछ पहले के मैचेस में दिखाई दी, जहां पे काफी हद तक उनको कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब दे आर गोइंग टू गो थ्रू. इफ यू लुक एट द रिकॉर्ड, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वी हैव ओनली वन 2 नॉकआउट गेम्स. सो रोहित शर्मा इस मामले में बहुत
बहुत क्लियर है कि वो बहुत क्लियरली ये प्लान करके आता है कि उसको करना क्या है। और अगर कोई एक इंसान कल कॉम्प्लिसेंट नहीं था तो वो रोहित शर्मा था। और आई थिंक मैं अभी भी कहता हूं कि जिस तरह उसने इस वर्ल्ड कप को अप्रोच किया है, और वो जो आपने एक बात बिल्कुल सही कही, आई थिंक रविंद्र जडेजा का वो थ्रो थोड़ा सा एड्रेनलिन पंपिंग रश ऑफ द ब्लड काइंड ऑफ थ्रो था, थोड़ा सा वो हुआ। पर उसने बॉलिंग चेंजेस करी, आई थिंक जब जब उसे लगा कि अब शामी की जरूरत है तब तब वो उसको वापस लाया, तब तब उसने विकेट निकाला। और वो बुमराह से पूरा टाइम बात कर रहा था, बिकॉज बुमराह थोड़ा सा प्रेशर में थे, उनको थोड़ा सा बीच में हिट्स पड़ गई थी। पर रोहित वाज वन गाय ऑन द फील्ड यस्टरडे हु वाज इन टोटल कमांड, एंड वो टॉस से कमांड में था। आई कुड सी हिम, वो एक प्योर मोटिव लेके आया था। और आई वी मस्ट एडमिट, आई थिंक आप रोहित के अगर स्कोर्स देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो उसके 2 80s है, कुछ मेरे ख्याल से 3 या 4 40s है। और वो 2 80s वो आसानी से 100 पे कन्वर्ट कर सकता था अगर वो चाहता तो। पर उसने पूरी तरह सेल्फलेस क्रिकेट खेली है, और वो उसने कल करके दिखाया। जब बड़ा क्वेश्चन आया कि क्या वो नॉकआउट में कर सकता है, उसने फिर करके दिखाया। और वो दिख रहे थे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कि ही एज लॉन्ग एज ही स्टैंडिंग फॉर इंडिया with that kind of a mindset, he will be able to control the team well. And I think his experience and the way he handled the team yesterday will be very important for us in the final. When it comes to न्यूजीलैंड, देखिए, मैं न्यूजीलैंड की एक बात है कि जैसे साउथ अफ्रीका को तकलीफ होती है, वैसे न्यूजीलैंड अपना गेम उठाती है। और मैं काफी क्रेडिट देना चाहूंगा डैरिल मिचेल को। आई थिंक ही द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड कप हु हैज हिट 200 अगेंस्ट इंडिया। बाकी टीमें 50, 100 और 80, 90, 100, 150 पार नहीं कर पा रही, और वो आदमी 2 सेंचुरी मार गया इंडिया के अगेंस्ट। तो कमिटमेंट लेवल्स वेरी हाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक एंड इफ इट वाज एनी अदर कैप्टन हु हैड गॉट इनटू अ स्पेल, शायद से डैरिल मिचेल और केन विलियमसन मैच और लंबा खींच सकते थे। भास्कर ने बिल्कुल सही बात बोली। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि शायद से इंडिया के हाथ से मैच जा रहा है, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम 12, 12.5, 13 तक रन रेट पहुंच चुका था। और इतना आसान नहीं होता है, अगर 1 या 2 विकेट भी आपकी अगर निकल गई तो आने वाले प्लेयर को 12 का एवरेज मेंटेन करना मुश्किल होता है। सो लाइक भास्कर सेड कि वो बात एब्सोल्युटली कंट्रोल में थी, पर मैच क्लोज जा सकता था। और इसीलिए मैं रोहित को पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा। न्यूजीलैंड के लिए मेरे ख्याल से दे हैव अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस। आई थिंक पहली बात तो ये कि आई थिंक दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ दैट इवन विदाउट द फुल स्ट्रेंथ टीम, आई थिंक दे आर एबल टू compete in this World Cup or any form of cricket. So I think they are definitely a very strong unit as such. कुछ अच्छे उनके फाइंड्स हैं। कुछ मुझे ऐसा लगा कि शायद से कुछ प्लेयर्स जिनसे मुझे उम्मीद थी थोड़ा फेल कर गए। चैपमैन जिस तरह आए थे वर्ल्ड कप में, मुझे थोड़ा सा लग रहा था। और कल जब वो आए खेलने तो मेरे मन में थोड़ा सा हल्का सा डर था कि ये एक, बिकॉज ही इज अ लीथल प्लेयर। मतलब मैंने उनका एक, लकीली वो हैदराबाद में ही मैच हुआ, जहां ऑफ कोर्स काइंड ऑफ लकीली मेरे पास 2 VIP पासेस थे जब पाकिस्तान के साथ उनका मैच हुआ। जो हाल उन्होंने किया है, जो बैटिंग उन्होंने करी, मैंने अपनी आंखों से देखी। और जिस तरह वो बॉल मारते हैं, तो उनसे मुझे काफी उम्मीद थी। थोड़ा सा निराश किया उन्होंने। पर आई थिंक ओवरऑल न्यूजीलैंड विल टेक अवे लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, एंड maybe on another day, with Shreyas Iyer having not played that knock, I think the match would have really become close yesterday. Rajiv. राइट राइट, नहीं कसम से मतलब 350, 340 या 350 बनता तो फिर हम फंस सकते थे, बिल्कुल फंस सकते थे। लेकिन अच्छा खेला मतलब न्यूजीलैंड ने। और ये भी बोलना पड़ेगा कि दे असिस्ट द सिचुएशन वेरी क्विकली, कि ठीक है हमारा 2 विकेट गिर गया, जो आज साउथ अफ्रीका ने नहीं किया। कल वो चाहते तो किधर उधर मार सकते थे, बट दे प्लेड स्लोली, स्लोली बिल्ड किया उन्होंने, और फिर एक लेवल पे जाके टेम्पो हाई किया उन्होंने। बहुत बढ़िया खेला उन्होंने, मतलब मानना पड़ेगा कि एक सेमीफाइनल के लिए तो द टॉपिक, मतलब फाइनल थिंग यही है कि ये दोनों सेमीफाइनल्स वाज वर्दी ऑफ अ नॉकआउट। एंड देन यू फील वेरी हैप्पी कि आपके टॉप 4 टीम्स ही पहुंचा है यहाँ पे करके। सो मुझे तो बड़ा सही लगा। एंड आई थिंक द वो एक टॉप 2 टीम। वो एक विकेट मैं भूल जाऊंगा इसलिए मैं बस बोल रहा हूँ। वो एक विकेट जो उन्होंने निकाला ना, वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने पका के विकेट निकाला। तो वो एक मौका ऐसा आया था जब वो मारे जा रहा था, और देन सडनली वो कुलदीप को लेके आया। उन 2 ओवर में सिर्फ 3 या 4 रन निकले, और अगले हाँ ओवर में वो शामी को लाके उसने विकेट निकाली। तो ये जो मुझे ये जो स्ट्रैटेजी, जिस तरह उसने अपना दिमाग ठंडा रख के जो काम किया उस वक्त, वो कुछ क्रूशियल पॉइंट्स वर एब्सोल्युटली गेम चेंजर्स yesterday. भाई, इवन सॉरी, सिराज आप लास्ट, कुछ कह रहे थे सर। नहीं नहीं, सो लास्ट में सिराज जब आया था, ही वाज बॉलिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। उधर ही बॉल, उस चैनल में ही बॉल किए जा रहा था, बिकॉज ही नोज कि मिचेल वाज टायरिंग, एंड उसमें उतना एनर्जी नहीं है कि उधर जाके मार सके करके।
they were also smart. They got Glenn Phillips when the strategy. तो मिचेल ने सिंगल लेके ग्लेन फिलिप्स को निकाला और सिराज को मारा उसने ग्लेन फिलिप्स ने. सो मतलब these were a real good mind games. So अच्छा था, मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगा कि दोनों टीम्स अच्छा खेला. I also feel yesterday I never felt pressure. बहुत सारे मैसेजेस आते गए बट नेवर फेल्ट कि इंडिया कंट्रोल से हाथ धो बैठा करके. आज ये भी है कि वी हैव टू से कि कैप्टनसी अच्छा होना कितना जरूरी है करके. बबूमा का कैप्टनसी कहीं ना कहीं पीछे रह गया. एंड मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उसको टीम में इज्जत नहीं है. उसको, मुझे ऐसा फील होता है कि दे ऑल प्ले फॉर अ कॉमन कॉज. सो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए खेलते हैं, सो दे ऑल वुड ऑब्वियसली डू देयर बिट. बट कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आज डिकॉक वाज marshalling his troops very strongly. Markram, who was captaining the side when Bavuma was not available, was doing his bit, but was not that kind of, उस लेवल का जो इन्वॉल्वमेंट था वो नहीं था. ये सब था. सो भास्कर, मैं आपके पास आता हूँ. वी डोंट हैव मच टाइम बट आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू comment on captaincy. So two matches we saw, one was won by very good captaincy by Rohit Sharma, and one was won by very good captaincy, actually bad captaincy, lost bad captaincy by Bavuma. But दोनों के moments थे. Rohit Sharma also lost control at some point of time. Bavuma got control over his side जब 5 विकेट गिरे. But somewhere we could see the difference between the two. आप क्या कहेंगे इसके बारे में? See, first of all, South Africa के पास उतने runs थे ही नहीं. So that we have to first. That was the bottom line. So any captain would look bad when you have such a small total to defend. So if suppose और 25-30 रन 40 रन बन जाते और Australia would have got out for 220, would have said, "Wow, Bavuma did a reasonably good job." But of course, the way he gave away 70 runs in the first 10 overs was like, I was expecting one spinner to open straight away from the other end. दोनों तरफ से फास्ट बॉलर डाल रहे हैं, पिट रहे हैं, एंड यू बोल फॉर ऑलमोस्ट 10 ओवर्स. आई थिंक छठवें या सातवें ओवर में ही ब्रॉट इन मार्करम, राइट? मार्करम को 8th ओवर में शायद लेके आया. 8th ओवर में लेके आया. सो आई थिंक दैट्स वेयर ही लॉस्ट द प्लॉट. Of course, you have when you have people around you, there would be people telling you what to do, what not to do. But you are against Australia, so of course Bavuma is not an inspirational figure. He's not a world class cricketer. Let's face it. Okay, he's just a marginal player who's just in the team and he's out of the team sometimes, and he's in the team now since he's the captain. He's not some world class player like Virat Kohli or a Joe Root who has a place in the team, who's an all time great, and then he's given the captaincy. So that's always going to be an issue. So suppose if India giving the captaincy to say Sanjay Manjrekar or say Ajinkya Rahane. Rahane is a great captain. I shouldn't have brought his name in, but Manjrekar was considered for captaincy, if you remember, in the late 90s, isn't it? 96, 97 Yeah. के आसपास, Yeah. 98 के आसपास. So I think he is that kind of a cricketer, who's just a marginal cricketer, and so that's always going to be an issue. He wouldn't have the respect say an all-time great has, or he has to be somebody like Colin Cowdrey, who's a very mediocre player, but he's a PhD in psychology and he's just there for captaincy. So who averages 24 in Test cricket. I think he's the only one. Apart from that, you don't really see ordinary players being given captaincy. So I think that's where the problem is. South African cricket has lost a lot of big players like Hashim Amla, A.B. de Villiers, Fab du Plessis, Dale Steyn, Moni Mokal. A lot of big names. Jacques Kallis, not to forget him. He also was there like 8-9 years back. So I think they have lost a lot of big names. And it'll take time for them to get replacements. Of course, they are a good one day unit, very good one day unit, but they need to figure out who are the players you need to really have and invest in them, not to just chop and change. And that's also a problem they've been having of late. So let's see if Bavuma continues as captain, or maybe they need to give somebody like Klaasen the captaincy for a long term. To see what they did after the 2003 debacle is they gave the captaincy to a 21-year-old Graham Smith. That really paid dividends. Of course, he might not have done well in World Cups, but he's still the most successful Test captain. So ऐसा कोई एक captaincy को उनको किसी अच्छे player को choose करके they have to invest in him and give him a long rope, especially in other formats. Okay, World Cups ठीक है, but you have 4 years from now till next World Cup, so probably you need to find somebody like that. Rajiv. नहीं, बहुत सॉलिड बोला आपने. बहुत सॉलिड बोला कि they have to find somebody. I think Markram is very eager to do some captaincy, so वो भी है. अमित सर, आपके पास आता हूँ. हमारे पास शायद 2 मिनट हैं.
आप भी इस कैप्टनसी के इस पूरे मुद्दे पे आप क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, मतलब हाउ विल यू रैप अप फॉर साउथ अफ्रीका? मतलब एक और बार चोक कर गया है यार, I क्या ही बोले। I I would say that. So मेरे ख्याल से देखिए, बर्मा को कैप्टनशिप भी तब मिली जब डिकॉक ने रिफ्यूज किया। वो T20 के वर्ल्ड कप में हुआ था जब उसने ही आई रियली डोंट नो व्हाई डिकॉक डिड, बिकॉज डिकॉक आई थिंक इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। वो अच्छा रिस्पेक्टेड प्लेयर है, एंड दैट्स हाउ ही केम इनटू पिक्चर, एंड सिंस देन ही इज बीन लकी इनफ टू काइंड ऑफ गेट दैट कैप्टनसी। ही इज बिट्स एंड पीसेस प्लेयर फॉर मी, इफ यू रियली आस्क मी। और वो मतलब मैं कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा कि अगर मैं जैसे आखिरी ओवर में अगर अगर हमें 10 या बीच में अगर 15 10 12 के रन रेट से स्कोर करना है तो वो नहीं कर सकता। और वो आई थिंक ओवरऑल उसका जो स्टेचर है टीम में वही एक कंसर्न है। अब जैसे आज आप देख ले कि मैं अभी वही कह रहा था कि अगर खुद आप कह रहे हैं कि आप अनफिट और आप फिर भी खेल रहे हैं, तो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट हाउ यू अप्रोच योर कैप्टनसी। सो मेरे मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीकन कैप्टनसी विल श्योरली गो थ्रू अ चेंज, एंड इट शुड गो थ्रू अ चेंज, and there are some very capable players in the team who can pick up the captaincy, who are experienced, who have the ability, maturity. So that will help them. I'm not saying that they should do that in all formats, but at least maybe test में हो सकता है वो अभी lead करे. But I think in the modern day cricket जो आपकी वनडे और T20 की है उसमें मेरे ख्याल से you need a fresh mind to come in. So that's my submission on Bowma, Rajiv. Great. So thank you so much. We are almost done with time. Thank you so much for joining. दोनों का inputs बहुत बढ़िया रहा. But we'll have a very special preview soon, maybe tomorrow or day after tomorrow, about the final. And so इतना matches हो गया, 47 matches हो गया है. अब वो एक 48th मैच पे क्या होगा उसके लिए करेंगे. Thank you so much, and good night to और both of you. Yeah. And Thank you. one last thing before we finish. So very interesting with our dear Pakistan. So इंडिया में मैच हुआ तो मॉर्गन मिकल उनके बॉलर थे, बॉलिंग कोच थे। अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे तो उन्होंने मॉर्गन मिकल को सैक कर दिया है। सो आई थिंक ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। So ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़। Anyway, so look forward to the final, Rajiv, and all the best to Team India. I'm sure we'll do it. Chalo, Yeah. all the best for Team India. Anyway, Jai Hind. Yeah. Yeah. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Jai Hind.